Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is mutual information and channel capacity. Before studying this part, we'll discuss what is the concept of binary symmetric channel. As the name indicates, it is binary channel, so we are supposed to transmit logic 0 and logic 1, and it is symmetric channel. The diagram is as shown in this figure. Suppose we are transmitting 0, that is logic 0 from this point. Ideally, we should expect at the output, you should expect the same thing, that is you should get logic 0. So this is called correct probability. If there is an error and I am transmitting 0, so due to error at the output, instead of getting 0, I might get logic 1. This is called probability of error, which is denoted by P. We know that total probability is 1. So if probability of error is P, probability of getting correct data is 1 minus P. तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया 0 ट्रांसमिट किया और आउटपुट में 0 आ रहा है, मतलब एक करेक्ट डेटा है. करेक्ट डेटा का प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा है 1 माइनस P. Why? Because probability of error is P. So probability of getting correct data is 1 minus P. सेम लॉजिक यहाँ 0 अप्लाई किया और एरर है, तो लॉजिक 1 आउटपुट में आ जाएगा. ये इस लाइन से इंडिकेट किया है. सो दिस इज द वैल्यू, आई मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ P विच इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. सेकेंड केस 1 अप्लाई किया है, तो लॉजिकली आउटपुट में 1 ही आना चाहिए. सो दिस इज करेक्ट डेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट डेटा इज 1 माइनस P. तो यहाँ पे 1 माइनस P लिखा है. If there is an error and if you are transmitting 1, you will get 0 at the output. So this is data related to error, so its probability of error is P. So such a channel is called binary symmetric channel. जैसे मैंने बताया input binary है and you are getting either two possibilities, whether either the data will be in error or data will be correct data. Next is definition of mutual information. So amount of information transmitted when xi is transmitted and yj is received. For example, अगर आपने xi मतलब 0 ट्रांसमिट किया और आउटपुट में yj मतलब 1 रिसीव हो रहा है, तो इस केस में वी नो दैट वी जस्ट नाउ डिस्कस दिस इज कॉल्ड द एरर. So and there is a probability of error which is denoted by P. So what we have written, amount of information transferred when xi is transmitted and yj is received, मतलब 0 ट्रांसमिट किया और 1 रिसीव हो रहा है, तो उस केस में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो गया, that is called mutual information. Notation is I in the bracket xi given semicolon yj. Definition is log probability of xi given yj. ये रीड कैसे करना है, this value probability of xi given yj. इसका मतलब है हमने xi ट्रांसमिट किया तो और आउटपुट में yj आ रहा है, सो इट इज रीड लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi given probability of getting xi given yj. Next, probability of xi, quite simple. This indicates the probability of xi. Now its properties. Mutual information is symmetry. इसका मतलब है I of xy is same as I of yx. Then mutual information, mi means mutual information, is non-negative. So this information value is always greater than or equals to 0. Third, mathematical equation to calculate the mutual information is h of x. H is called entropy. So h of x is entropy of x, h of y is entropy of y minus h of x comma y. H of x comma y is called as joint entropy. That is entropy of joint occurrence of x and y. दिस इज द पार्ट ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ चैनल कैपेसिटी. द मैक्सिमम पॉसिबल बिट रेट which a channel can support without adding any error is called channel capacity. बहुत सिंपल है. कैपेसिटी मतलब कितना मैक्सिमम वैल्यू that can be supported by the channel. So that's what we have written. The maximum possible bit rate which a channel can support without introducing an error is called channel capacity, and this channel capacity is maximum of mutual information, that is IXY. Now let us solve the numerical.
देखो ये न्यूमेरिकल इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें पूरा सब वेरिएशन कवर हो जाता है, तो आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट एनी न्यूमेरिकल. सो गिवन क्वेश्चन इज consider the given binary channel. This diagram is given in the question. First part, construct the channel matrix. Second part, calculate probability of y if sources are equiprobable. Third part, calculate all entropies, mutual information and channel capacity. This is the given diagram in the question. Look at the diagram. At the input side, x1 and x2 are written. That means x indicates input. At the output side, y1 and y2 notations are written. So y indicates output. Diagram read कैसे करना है, ऐसे सोचना है. देखो x input है, y output है. So if I am transmitting x1, so naturally I should get y1 at the output. If I want to get the correct data, तो x1 ट्रांसमिट करने के बाद अगर एरर नहीं है, डेटा करेक्ट है, तो आउटपुट में y1 आना चाहिए. अगर एरर है तो मैंने x1 ट्रांसमिट किया है, देन आई विल गेट x2 इफ देयर इज आई विल गेट y2 इफ देयर इज एन एरर. सो हाउ टू रीड द वैल्यूज? As I said, if you are transmitting x1 and getting y1, this is correct data. So this probability, this value is given, that is 0.9. So 0.9 indicates you are transmitting x1 and at the output you are getting the same thing, that is y1. That means you are getting correct data whose value is 0.9. On the other hand, if you are transmitting x1 at the output you are getting y2 whose value is 0.1. This is called probability of error because I am transmitting x1 and I am getting y2. Same way अगर आप x2 ट्रांसमिट कर रहे हो और आउटपुट में y2 आ रहा है, so that is the correct data whose value is 0.8. Same way if you are transmitting x2 and if you are getting y1, that is the data is in error whose value is 0.2. So this is the way how to read the values from the diagram. Now first part, calculation of channel matrix. How to do this calculation? I will write the notation like this, probability of y given x. ये notation कैसे लिखा है? आउटपुट में y1 y2 है, मतलब you are getting y at the output. इनपुट में हम लोगों ने x1 x2 लिखा है, means you are applying x at the input. So this notation is read like this, probability of getting y when x is applied, that is probability of y given x. मतलब हम लोगों को y आउटपुट आ रहा है जब हम लोग x इनपुट अप्लाई कर रहे हैं. So how to write the matrix? रोज जो होते हैं that are corresponding to inputs x1 x2, columns are corresponding to outputs y1 and y2. Now the things are very simple. जैसे मैंने बताया, ये लाइन देख लो, I am talking about this line. How to read it? If you are transmitting x1, you are getting y1 whose value is 0.9. So this particular value I can read it like this, probability of y1 given x1. मतलब y1 आ रहा है आउटपुट में और x1 अप्लाई किया है, which is shown by this line, whose value is 0.9. So I will write this value over here, 0.9. मतलब y1 आ रहा है और x1 अप्लाई किया है. Same way y2 आ रहा है और x1 अप्लाई किया है, मतलब look at this line, x1 अप्लाई किया है और हम लोगों को y2 आ रहा है. This value is 0.1. So I will write this value over here, 0.1. Same way x2 अप्लाई किया और y1 आ रहा है. देखो ये कॉलम y1 का है, ये रो x2 का है. So you are applying x2 and you are getting y1. This value is 0.2. On the same lines x2 अप्लाई कर रहे हो और y2 आ रहा है, मतलब ये लाइन x2 अप्लाई कर रहे हो और y2 आ रहा है, whose value is 0.8. So this is the corresponding channel matrix which I have written by referring the given channel. Next step, let us calculate probability of x comma y. This is probability of joint occurrence of x and y. In the given question, it is clearly mentioned that if the sources are equiprobable, sources means input side, the sources are equiprobable, so from this sentence we can write probability of x1 is 0.5 and probability of x2. There are two inputs, x1 and x2. Sources are equiprobable, means probability of x1 is 0.5. Same way probability of x2 is 0.5 because they are equiprobable. So what I said, we have to calculate p x comma y. The formula is p y given x into probability of x. This is the matrix of p y given x. Now make the thing simple. Apart from complicated mathematical calculations, ऐसे याद रखना है
ये पी वाई गिवन एक्स का मैट्रिक्स है. First row corresponds to value of x1. Second row corresponds to value of x2. Formula क्या है? P y given x means this matrix multiplied with probability of x, where probability of x1 is 0.5, probability of x2 is 0.5. Make the thing simple. पहला रो जो मैंने बताया it is corresponding to x1. तो ये सब वैल्यूज को P of x1 से मल्टीप्लाई करना है. मतलब ये 0.9 into 0.5, ये मतलब P of x1 से पहले रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. सो यू विल गेट 0.45. ये 0.1 है. अगेन 0.1 इंटू P of x1, क्योंकि ये 0.1 इज रिलेटेड टू रो x1, सो इट विल बिकम 0.05. नेक्स्ट 0.2. अब ये जो रो है सेकंड रो, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2. सो 0.2 इंटू 0.5, सो यू विल गेट 0.1. Next 0.8 into 0.5, you will get 0.4. This is the value of probability of x comma y. Now we have to calculate probability of output, that is probability of y. अब देखो, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिखा है, जो पहला कॉलम होता है हर एक मैट्रिक्स का, not only for this, for any matrix, first column is related to y1, second column is related to y2, first row is related to x1, second row is related to x2. तो हम लोगों को अगर P of y1 कैलकुलेट करना है, मेक द थिंग सिंपल, ये इसका एडिशन करना है, मतलब फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट्स है इसका एडिशन करना है. सो यू विल गेट इट 0.45 प्लस 0.10, दैट इज 0.55. Second value मतलब probability of y2, again addition of these two, so 0.05 into 0.4, you will get 0.45. This is the value of probability of y. Next, let us calculate all entropies. So step number 3, we'll calculate the entropy. First entropy is h of x. x1 and x2 are two inputs. We have to calculate the entropy of each input, I mean corresponding to each input. So formula is probability of x1 into log to the base 2 1 upon probability of x1 plus probability of x2 into log to the base 2 1 upon probability of x2. So let us put the values. Probability of x1 is 0.5, log to the base 2 1 upon 0.5 plus 0.5 log to the base 2, because probability of x2 is again 0.5, log to the base 2 1 upon 0.5. If you solve this, I have already explained in the last video how to calculate the value related to log to the base 2. So this value is 1 bit per message. 1 bit per message. Same way we have to calculate entropy related to y. सेम फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे x1 लिखा है वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 log टू द बेस 2 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 log टू द बेस 2 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y2. अगेन यू कैन वेल यूज ब्रैकेट इफ यू रिक्वायर्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, ये y का मैट्रिक्स है. प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इज 0.55. So this is 0.55 log to the base 2 1 upon 0.55 plus second probability of y2 is 0.45. So 0.45 log to the base 2 1 upon 0.45. If you solve this, this answer will be 0.9928. This is the value of entropy h of y. Now let us do the calculation of joint entropy. The notation is h of x comma y, which is formula is minus summation j is equals to 1 to m, second summation j is equals to 1 to n, probability of xi comma yj log 1 upon p probability xi comma yj. In this case the channel is symmetric and binary, so in place of m and n limits will be 2 2 respectively. Now how to solve this? Keep this outer summation as it is, मतलब I is equals to 1 to 2. J का वैल्यू पुट करते जाना है. पहले J का वैल्यू 1 पुट करना है. आई एम कीपिंग I as it is. तो इक्वेशन ऐसा होगा probability of xi, y1, J का वैल्यू 1 पहले पुट किया,
log to the base 2 1 upon probability of xi comma y1. फिर j का वैल्यू 2 पुट करना है, सो इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ xi comma y2 into log to the base 2 1 upon probability of xi comma y2. Next step, now expand the summation in terms of I. तो ये माइनस साइन एज इट इज रखते हैं, I का वैल्यू पहले वन पुट करना है, सो इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा y1 इंटू लॉग 1 अपॉन p x1 कॉमा y1 प्लस y का वैल्यू, अब देखो इसमें वैल्यू 1 पुट किया, इसमें भी 1 पुट करना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा y2, ये चाहो तो कैपिटल Y कर दो, y2 इंटू लॉग 1 upon probability of x1 comma y2. These are the two terms which I got after putting I is equals to 1. फिर I is equals to 2 put करना है, plus probability of x2 comma y1 log 1 by probability of x2 comma y1 plus probability of अब y का वैल्यू अब I का वैल्यू 2 पुट किया हमने, सो इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कॉमा y2 log 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कॉमा y2. इसका मतलब है वी हैव कंसिडर्ड 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. So probability of x1 comma y1, this is the matrix. Observe this matrix carefully. What I said earlier, इस मैट्रिक्स का जो रो है, दिस फर्स्ट रो corresponds to x1, सेकंड रो corresponds to x2. तो अगर मुझे ये पहला वैल्यू चाहिए, probability of x1 comma y1, so x1 comma y1 means this value 0.45, so 0.45 log to the base 2 1 upon 0.45 plus probability of x1 comma y2, so x1 comma y2 मतलब ये सेकंड वैल्यू x1 y2 मतलब ये वैल्यू 0.05 log to the base 2 1 upon 0.05 plus x2 comma y1 मतलब ये वैल्यू 0.1, so I will write it like this 0.1 log to the base 2 1 upon 0.1 plus लास्ट वैल्यू ये वैल्यू x2 comma y2 मतलब दिस वैल्यू 0.4 log to the base 2 1 upon 0.4 means if you don't want to remember this formula, make the thing simple. ये जो मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा y, उसके हर एक का एंट्रोपी का फॉर्मूला फॉलो करना है. मतलब पहला वैल्यू 0.45, सो 0.45 log 1 upon 0.45 प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू एंड सो ऑन. सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, आंसर ऑफ h of x comma y, that is joint entropy, will be 1.5955. 1.5955. This is the answer of probability of x comma y. Now next part, let us calculate the, not this is not the probability, this is entropy. This is the value of entropy x comma y. Now let us calculate entropy h given y. ये रीड ऐसे करके h given y, that means you will get value entropy x provided that entropy of y is available. Formula is h of x comma y, this value h of x comma y minus h of y. We have already done the calculation of h of x comma y, that is this value 1.5955. So this value can be written as 1.5955 minus h of y. H of y earlier we did the calculation, so put these values 1.5955 minus value of h of y. So this answer will be 0.6027. This is the entropy, conditional entropy, entropy h x given y. Now entropy h y given x is, the formula is h of x comma y minus h of x. सेम वे जैसे ये कैलकुलेशन किया वैसे वैल्यूज डायरेक्टली पुट करना है. सो दिस आंसर विल बी 0.5955. So this is about the calculation of all entropies.
Now last calculation, we have to calculate value of mutual information and channel capacity. The formula is pretty simple. Mutual information is I of x comma y. Formula is h of x plus h of y minus h of x comma y. We have already done the calculation of all entropies. So simply you have to put the values h of x plus h of y minus h of x comma y. That means this value 1.5955. So answer will be 0.3973. And last part, channel capacity. This is binary symmetric channel. For binary symmetric channel, formula is channel capacity is C is equals to 1 plus P log P to the base 2 plus 1 minus P log 1 minus P to the base 2. In the question it is mentioned that the probabilities, there are equiprobable, this is equiprobable channel, sources are equiprobable. That means the value of P is 0.5. Same way total probability 1 hota hai, so value of 1 minus P is 0.5. So if you just put the values 1 plus 0.5 log 0.5 to the base 2 plus 1 minus 0.5 is again 0.5, so 0.5 log to the base 2 0.5. So this answer will be 2 bits per channel. This is the answer of channel capacity. So this is the way how to solve the numericals as far as this mutual information and channel capacity is concerned. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने पूरे सब वेरिएशंस इस न्यूमेरिकल में कवर किए. So that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.